सो हाय डियर स्टूडेंट्स, आज आम देखा आमर लास्ट क्लास जो क्वेश्चन थिला से क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा। तो एग्जाम कमिंग वीक आम स्टार्ट हो जाऊँगी। हालो अल्केन हालो आरेंज चैप्टर एग्जाम अच्छी से हालो अल्केन और हालो आरेंज केते गुडे क्वेश्चन को आम सॉल्व करवा ए क्लास रे। सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज अटेंशन। आज आम टॉपिक है द क्वेश्चन आंसर। सम क्वेश्चन आंसर विल डिस्कस इन दिस सेक्शन of alkyl halide and aryl halide. Clear? So today's topic is the question answer of some important question of with their answer of alkyl halide and aryl halide. So let discussion will start. Question number 1. This is the question number 1. Prepare alkyl halide. Suppose exam रे question आसे prepare alkyl halide. Prepare alkyl halide from option 1 alkene, option 2 your alkane, option 3 your alcohol. So these are three methods. The question is asking prepare alkyl halide. How can you prepare the alkyl halide from alkene, alkane and alcohol? This is the question number 1. Today we will discuss the selected question or assignment what we are given in our last class. We will discuss the answer. Let the answer. Prepare alkyl halide. We know the formula for alkyl halide is Rx. Alkyl halide हमें कोथ्रु तैयारी करिबा alkene रू. So we know when alkene, answer 1 alkene, your carbon carbon double bond is your alkene. When alkene reacts with a halogen acid. So when alkene react with the halogen acid, so what happen? This reaction is undergoes your which reaction? Electrophilic addition reaction. So HX, now H plus and X minus. So one side H plus, first what happen? So we will not discuss right details here. Now our concept is how to prepare alkyl halide from alkene. So in alkyl halide, when alkene, this is alkene name is ethene. When alkene react with hydrochloric acid, H plus Cl minus गोटे साइड रे हाइड्रोजन जीवा गोटे साइड रे क्लोरीन जीवो. तो आंसर हो कौन CH3 CH2 Cl. This is your ethyl chloride. It is one of the alkyl halide you can say. Otherwise if you common general formula if you want you can write also R CH double bond CH R. This is also common formula we can write alkene. So when alkene react with the HX, so it is H plus X minus. So halogen गोटे स्पॉट हाइड्रोजन जीवा गोटे साइड रे हालोजन जीवा एडिशन रिएक्शन हम. सो दिस इज R CH2 सिंगल बॉन्ड CHX R. सो दिस इज आल्सो हालो अल्केन और अल्किल हैलाइड. सो आम एमती जनरल एक्सप्रेशन दे पारे नचेत ए टाइप रे अल्किन. सो व्हेन अल्किन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना द आंसर इज इथाइल क्लोराइड. सो दिस इज सफिशिएंट फॉर वन एग्जांपल और जनरल रिएक्शन. तो अल्किन रु केमिति आम अल्किल हैलाइड तैयारी करि परिया. तो अल्किन रे जदि मु हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो किंबा हालोजन एसिड रिएक्ट करी सेटा कौन हम अल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हो पार. क्लियर? सो अल्किन रिएक्ट विथ हालोजन एसिड. फॉर एग्जांपल अनदर सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऑलरेडी दिस इज प्रोपिन. दिस इज अ प्रोपिन. एटा सिमेट्रिकल ना अनसिमेट्रिकल अल्किन पिला माने एटा अनसिमेट्रिकल अल्किन मिथ इथ प्रोप. So react with suppose hydrochloric acid, it goes against, it goes which rule? Markovnikov's rule. So according to Markovnikov's rule, already I told, the negative part of the polar molecule get attached to that carbon atom which contain lesser number of hydrogen, and a positive will attach here. The answer will be CH3 CH Cl single bond CH3 2 chloropropane. The answer will be 2 chloropropane. सो ये भाव में विभिन्न प्रकार एग्जांपल हम देखे पारिबा जे अल्किन रू कई भाव में आम तैयारी करछे कोन अल्किल हैलाइड. क्लियर? गोटे एग्जांपल देले भी सफिशिएंट. व्हेन अल्किन रिएक्ट विथ हालोजन एसिड टू फॉर्म योर अल्काइल हैलाइड. क्लियर? नेक्स्ट जीवा अल्केन रू केम तैयारी करिया. आंसर नंबर 2 देखिबा. अल्केन यू नो द जनरल अल्केन रो हालोजिनेशन ऑफ अल्केन. नंबर 2 हाउ अल्किल हैलाइड अल्केन रू केम तैयारी करियो. हालोजिनेशन ऑफ अल्केन. हालोजिनेशन ऑफ अल्केन ऑलरेडी हम पढ़ाई पूर्व क्लास रे. हालोजिनेशन ऑफ अल्केन जनरली अल्केन जनरल फॉर्मूला वी कैन राइट RH CnH2n+1 HCnH2n+2. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन. व्हेन अल्केन रिएक्ट विथ halogen
in presence of some suitable reagent we can say heat apply kari pariya. So halogen will be substituted on the place of hydrogen. This is product Rx plus HX. Clear? So simple alkane react with halogen to form alkyl halide. Eta be pariyo. So for example, if you will give ethane C2H6, this is your ethane, reacts with the chlorine or bromine or iodine, so C2H5Cl. Example gote pakaibo, ethane react with the chlorine to form ethyl chloride plus HCl. ethyl chloride plus hydrochloric acid. बुझे पिला माने. सो ये भाव में आल्केन तैयारी कर पार तार डिटेल्स आम पढ़े फास्ट वीडियो पढ़ाई प्रिपेरेसन ऑफ आल्किल हालाइड आरिल हालाइड डिटेल्स तार देखिपर कौ हालोजेन केते रिएक्टिव अधिक होची तो से सब जिन दरकार नहीं आम जस्ट क्वेश्चन जहाँ पचार आम से अनुजाई करा. नेक्स्ट अल्कोहल अल्कोहल रू किभली भाव में आल्किल हालाइड तैयारी करबा से कहूँ व्हेन अल्कोहल ऑलरेडी यू डिस्कस्ड अल्कोहल फॉर्मूला ROH व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ आइदर PCl5 or alcohol reacts with PCl3 phosphorus trichloride और alcohol react with thionyl chloride SOCl2 डकाई देखि पारियो पिला माने नोट रे. तो अल्कोहल आइदर रिएक्शन करियो PCl5 हो PCl3 हो SOCl2 जा सहित रिएक्शन कले तो अल्कोहल को होलो ना इट विल फॉर्म RCl alkyl chloride plus POCl3 plus HCl. So this is the alkyl chloride major product. और अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3 जो तीन अल्कोहल नवा तो आंसर विल बी सिमिलरली RCl प्लस H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड बाहर हाइड्रोजन तीन अच्छे बालांस करेंगे 3 मल्टीप्लाई कर 3 सो अल्किल क्लोराइड इज फॉर्म और अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड योर थायोनाइल क्लोराइड डकाई नोट देखिपर SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड अल्कोहल जो थायोनाइल क्लोराइड रिएक्शन करियो नोट देख प्रिपरेशन रे अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 the product is your RCl plus SO2 plus HCl. Another method alcohol जब मु लुकास रिएजेंट पकेबी लुकास टेस्ट तुमको अल्कोहल चैप्टर पढ़ाबो डिटेल्स. सो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्लियर. सो व्हाट हैपन हियर आर OH को H वाटर हो गला RCl अल्किल क्लोराइड अल्किल हालाइड हो. सो हालोजन जगह में क्लोरीन लगेछि हो कोन दिस इज योर अल्किल क्लोराइड इज फॉर्म. बुझीगला पिला माने एक क्वेश्चन थिला 1 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन रे. तो तुम अल्किल हालाइड केंद्र प्रस्तुत करि परियो प्रिपेयर केंद्र करि परियो अल्केन रू और अल्कोहल रू तीनटा. हाँ लॉन्ग क्वेश्चन मीन्स यू हैव टू राइट विथ जनरल रिएक्शन एंड वन एग्जांपल. लॉन्ग क्वेश्चन आसुची जदि तुम जनरल रिएक्शन लिखियो ता तल गोटे R जगह CH3 पकई परियो मिथानॉल. क्लियर बुझिबो छ ना नहीं. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 2 कौन अच्छे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी कह क्वेश्चन नंबर 2 तार 1 क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नो फर्स्ट पार्ट रे प्रिपरेशन सेकंड पार्ट रे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कौन अच्छी ना क्वेश्चन इज हाउ इथाइल क्लोराइड reacts with क्वेश्चन नंबर 2 गत काल क्लास रो हाउ इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ ऑप्शन 1 अच्छी एमोनिया ऑप्शन 2 अच्छी C2 सॉरी पॉइंट दे B2 C2H5ONA सोडियम इथोक्साइड ऑप्शन 3 अच्छी KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड ऑप्शन 4 अच्छी AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड. सो हाउ इथाइल क्लोराइड कि भाव में रिएक्शन करिवो का सहित ना अमोनिया सोडियम इथोक्साइड पोटेशियम नाइट्राइड सिल्वर नाइट्राइड AgNO2. तो आंसर देखिया इथाइल क्लोराइड फॉर्मूला कौन C2H5Cl. जदि अमोनिया रिएक्शन करिवो द प्रोडक्ट इज योर C2H5NH2 इथाइल अमीन C2H5NH2 आ गोटे H को Cl HCl ethyl amine is formed. So ethyl chloride reacts with ammonia to form ethyl amine. Next ethyl chloride reacts with sodium ethoxide C2H5ONA. Ethyl chloride react with the sodium ethoxide. The answer is C2H5O C2H5
C2H5 O C2H5 plus NaCl क्लियर एटा देख पे क्वेश्चन अच्छी हाउ इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ जल्दी जल्दी आंसर कर अमोनिया जदि एक्सेस रिएक्शन होता अल्किल हैलाइड तो सेकेंडरी अमीन टर्शियरी अमीन बाहर था जो आम अमीन चैप्टर में पढ़ेगा डिटेल्स सो क्वेश्चन पचार क्या होगा व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ क्या विथ अमोनिया व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनिया दिस इज इथाइल क्लोराइड react with the ammonia the product is your C2H5 NH2 ethyl amine plus hydrochloric acid so this is NH2H plus NH2 minus nucleophilic substitution reaction हम पढ़े तो amine group आसी substitute होगा हाइड्रोजन बाहर सोडियम इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम इथोक्साइड C2H5 ON कौन पढ़ती सोडियम इथोक्साइड सोडियम इथोक्साइड कटिगला गोटे वीडियो हम सोडियम इथोक्साइड द आंसर इज योर डाईइथाइल ईथर डाईइथाइल ईथर डाईइथाइल ईथर द आंसर इज योर व्हाट डाईइथाइल ईथर जल्दी जल्दी देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी मटेरियल Next question is your what happen when ethyl chloride reacts with the potassium nitrite KNO2. Ethyl chloride reacts with the potassium nitrite KNO2. The product is your nitrite. Next question. If ethyl chloride reacts with the potassium nitrite, the answer will be this is NO2 ONO ambidextrous nucleophile quite. C2H5 ONO plus KCl. This is nitrite. Ethyl nitrite. Ethyl nitrite will form. This is your ethyl nitrite. Ethyl chloride reacts with the KNO2 to form ethyl nitrite. Clear? Next question देखिए कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ AgNO2 द प्रोडक्ट इज एटा पचार दे KNO2 ना AgNO2 कन्फ्यूज करने तो KNO2 पोटासियम नाइट्राइट KNO2 रे ONO बाहर नाइट्राइट ON डबल बॉन्ड O नाइट्राइट सो इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्राइट C2H5 NO2 नाइट्रोइथेन आंसर अलग अलग बाहर कन्फ्यूज करने नाइट्रोइथेन नाइट्रोइथेन बुझे इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ AgNO2 नाइट्रोइथेन क्लियर सो NO2 स्ट्रक्चर मत N डबल बॉन्ड O ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O NO2 तो ये जे सिल्वर नाइट्राइट रे NO2 ये NO2 फॉर्म हम नेक्स्ट क्वेश्चन एटा थिला क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर 2 ऑफ बीट थिला 2 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन देखिया क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन देखो कौन अछि क्वेश्चन लेट द क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 Prepare ethyl bromide from silver salt of acid. Your question number 2 prepare ethyl bromide from silver salt of acid silver salt of acid रू आम ethyl bromide केम तैयारी करिया क्वेश्चन नंबर 2 एंड ता सहित मिसे एटा तो 7 मार्क हम ना एटा 2 मार्क होने थिबा ता सहित कोन कोन अछि हाउ सिल्वर हाउ व्हाट हैपन व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ का सहित रिएक्शन करे पचाची रिएजेंट ओडा KOH कोन aqueous then AgCN then KCN बस सोडियम मेटल ओके then Mg magnesium metal hey let's see this question this is another long question तमर गतकाल लास्ट क्लास रे असाइनमेंट रो क्वेश्चन नंबर 2 तार सॉल्यूशन वाला देखो प्रिपेयर इथाइल ब्रोमाइड तैयारी करो कौन तैयारी करिया पचार सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड वी नो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्मूला होची RCOAg दिस इज द आंसर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOAg
This is Hunds-Dicker reaction. Which reaction? डकाइतो नोट देखिबारे पिले दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आल्सो Hunds-Dicker reaction. बोरोडाइन Hunds-Dicker reaction. You can see the note Hunds-Dicker reaction. Material दिया इतियो. You can see also the material. In this reaction, what happen? Silver salt of carboxylic. Your carboxylic acid formula पिले माने जानजो RCOOH. This is called which acid? Carboxylic acid. Which acid? तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो फॉर्मूला होची RCOH एडी H कटिके Ag लागिला मेटल लागिला. दिस इज अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. व्हिच एसिड? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ ब्रोमीन in presence of a CCl4 carbon tetrachloride. Then the product is your RBr डकाई दिबो alkyl bromide. Hey, alkyl bromide RBr plus CO2 carbon dioxide plus AgBr. So alkyl halide is formed easily. Alkyl bromide is formed from note it. Practice. For example, question is not asking is ethyl bromide you prepare. Which bromide? Ethyl bromide. Your ethyl bromide formula it is C2H5Br. You have to prepare this molecule. So how we will put here R के बदले हम C2H5 डाल सकते हैं. Ethyl C2H5COOH. This is silver propanoate. This is a silver propanoate or silver salt propanoic acid. C2H5COOH react with the bromine in presence of a CCl4. So what is the answer? Similarly, generally R के बदले C2H5Br ethyl bromide plus carbon dioxide plus AgBr silver bromide. This is the answer. So we can prepare ethyl bromide. We can prepare easily like this. So this is the ethyl bromide you can prepare from silver. This reaction is called a Hunds-Dicker reaction. Next. Next row, write the reaction how ethyl bromide or what happen when ethyl bromide reacts with a reagent. First reaction देखिए ethyl bromide C2H5Br ethyl bromide reacts with KOH aqueous. Hey, ethyl bromide reacts with aqueous potassium hydroxide KOH. So what is the answer? This is your K plus OH minus the nucleophile OH minus. So OH minus will be substituted here and the answer will be C2H5OH plus KBr. C2H5OH plus KBr. This is ethyl alcohol plus potassium bromide. Then what happen when ethyl bromide react with the silver cyanide? Silver cyanide. Ethyl bromide react with the silver cyanide AgCN. What is the answer? The product is your isocyanide will form here. Ethyl isocyanide. Silver case, the product C2H5NC plus AgBr. This is your ethyl isocyanide. So the potassium cyanide KCN, the product will be cyanide, ethyl cyanide. So ethyl isocyanide. We know CN and NC. These are ambidextrous nucleophile. What is? There will be a question. Ambidextrous nucleophile. CNNC, NO2 and ONO, nitro and nitrite. These are some ambidextrous nucleophiles. So the question by chance give to example ambidextrous nucleophile CN and NO2. Okay, these are some ambidextrous nucleophile. Then what happen? Oh, this is your yes already. Next question is potassium iodide. Potassium cyanide. When ethyl bromide react with the potassium cyanide, what is the answer? Ethyl cyanide C2H5CN plus KCN KBr potassium bromide. This is a ethyl cyanide or ethyl nitrile. Ethyl cyanide common name. बुझी पारछो रिएक्शन ओडा हम ऑलरेडी पढ़े सारछे. आज किछि क्वेश्चन देइथलो ता आंसर डिस्कशन करा होछि. प्रैक्टिस इट विल गिव यू मोर इनफॉर्म. प्रैक्टिस करो बारंबार प्रैक्टिस कले ही तुमको रिजल्ट मिलियो रिएक्शन रा. ऑर्गेनिक रिक्वायर्ड मोर प्रैक्टिस. नेक्स्ट विल सी another question. The next question, how ethyl bromide react with the sodium metal. Very interesting question. How ethyl bromide react with the sodium metal. Let's how ethyl bromide
react with the sodium metal. This is Wurtz reaction. Which reaction? डका नोट देखिपर पिला माने alkyl halide react with the sodium metal. So similarly ethyl bromide you have to take 2 molecules of ethyl bromide. Wurtz reaction. Which reaction? When ethyl bromide react with the sodium metal, dita sodium metal nabo our ethyl ethyl bromide nabo. So 2 molecules of ethyl bromide. बारंबार कहि 2 molecules of ethyl bromide. एटा गोटे ethyl bromide is C2H5 Bear, our ethyl bromide C2H5 Bear. 2 molecules of ethyl bromide react with the sodium metal in presence of a dry ether. The product is your alkanol, higher alkanol form. This is 2Na Bear and C4H10. The product butane. What is the answer? Butane. C4H10 is called what? Alkane ro fourth member. डकाइथियो alkane CnH2n plus 2 first year पढ़ाइथियो. So this is the name alkanol form butane. Clear? Next we will see next question. Do you understand? Huh? This reaction called which reaction? Wurtz reaction. Very important question. परीक्षा आसुची पिला माने. What is Wurtz fitting reaction? Wurtz reaction, sir. This is simple Wurtz reaction. In this reaction, when alkyl halide react with the sodium metal in presence of a dry ether to form alkane, higher alkane. Form higher alkane. This is called which reaction? Wurtz reaction. So question em the alkyl halide the sodium metal once dei dela तब Wurtz reaction एडी पके परियो. Clear? 2 molecules नबो. Next question. How ethyl bromide react with the magnesium metal? Any alkyl halide react with the magnesium metal in ethereal solution to form Grignard's reagent. What is? So similarly here ethyl bromide C2H5Br reacts with the magnesium metal RMgX Grignard reagent. This is C2H5MgBr ethyl magnesium bromide. It is a Grignard reagent RMgX. You write the answer. Ethyl bromide react with the magnesium metal. The answer is C2H5MgBr. Ethyl magnesium bromide. Ethyl magnesium bromide. Clear? So this is all about question number 2 long question. Now question number 3. How many long questions are given? 5 or 4? 5. Then question number 3 answer, just see. Question number 3. Your question number 3, long question number 3. Incredible. Your question number 3. Yes? From benzene. Yes, prepare or Benzene diazonium chloride. from benzene diazonium chloride. Prepare. Question number 3, from benzene diazonium chloride. Prepare. From benzene diazonium chloride, prepare Chlorobenzene. chlorobenzene, Bromobenzene. bromobenzene, Fluorobenzene. fluorobenzene. Iodobenzene. So all halo are in C. How can you prepare from BDC and iodobenzene? Fluoro, chloro, bromo, iodo, all benzene, iodobenzene. So a question got a simple question now selected a question council पे जे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रो तमे ए सब हालो आयन्स प्रस्तुत करो प्रिपेयर करो बाय फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम हालो फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड you prepare all this type of haloarenes. So starting from benzene diazonium chloride, how can you manufacture these all? जी another question, you know B21, yes B2, what is B2? Chlorobenzene reacts with उसके साथ और एक क्वेश्चन मिला है हाउ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ यस Cl2 in FeCl3. ऑप्शन 1 Cl2 in FeCl3, then option 2 NaOH aqueous sodium hydroxide dissolved in hydrochloric acid with some temperature and pressure must be given, then CH3COCl. this is your CH3COCl acetyl chloride in anhydrous in presence of anhydrous AlCl3. Okay,
So my dear students, it is a question for your assignment basis of haloalkane haloarenes. Question number 3, long question. We are practicing long question. ये भली जब काउंसिल लंग क्वेश्चन आसला आम के आंसर रखा आ मु तुम मानक आउ गोटे जिनस इंट्रोड्यूस करिया चाहती रिसेंटली वी आर जस्ट सॉल्विंग वी विल डू द प्रैक्टिकल क्लास. So practical knowledge of Sunday to Sunday class will start very soon. Only Sunday to Sunday. Clear? So let the answer. So this is the question, complete question or answer hame kariya. So question number 1, first option, question number 1, from benzene diazonium chloride, you know the formula of benzene diazonium chloride? The answer I will do one by. Benzene diazonium chloride, this is your benzene diazonium chloride. Benzene के ऊपर N2 plus Cl minus, benzene N2 plus diazonium Cl minus chloride. This is benzene diazonium chloride, BDC, benzene diazonium chloride. This is the formula of BDC, benzene diazonium chloride. The benzene diazonium chloride के chlorobenzene तैयारी करे. When benzene diazonium chloride react with the cuprous chloride in dissolve in hydrochloric acid, CuCl, cuprous chloride dissolved in hydrochloric acid, the product is your chlorobenzene. So diazonium chlorobenzene plus nitrogen gas will evolve. Clear? Write this reaction. When BDC, benzene diazonium react with the cuprous chloride, CuCl, dissolved in hydrochloric acid, the product is your chlorobenzene. Similarly, if BDC similarly, how can you prepare this is benzene diazonium chloride, bromobenzene, idobenzene, all types of benzene we can manufacture. How? All types of benzene will manufacture. Haloarenes. It is an important compound, BDC, benzene diazonium chloride. Then bromobenzene. How can you prepare bromobenzene? So benzene diazonium chloride react with the CuBr in dissolve in HPr, hydrobromic acid, that provides the bromobenzene. What will form? So benzene diazonium chloride react with the cuprous bromide dissolved in hydrobromic acid, the product is of bromobenzene. How can you prepare this? Both reactions are called your Sand-Meyers reaction. Which reaction? Very important question, Sand-Meyers reaction. Short note भी पिला माने परीक्षा पचारि परछि. So preparation of chlorobenzene and bromobenzene from benzene diazonium salt is called your Sand-Meyers reaction. Sand-Meyers reaction. मन रहला. So benzene diazonium copper chloride HCl dissolve करी copper bromide HBr पकेबी chloro और bromobenzene बाहरियो. ए reaction को हमें Sand-Meyers reaction कहि परिया. Then fluorobenzene के हम तैयारी करिया. Fluorobenzene. Fluorobenzene. Your benzene diazonium chloride. Option 3. Benzene diazonium chloride if react with the fluoroboric acid. Reacts with the fluoroboric acid. Your benzene, option number 3 answer plata. Benzene diazonium chloride react with the fluoroboric acid. HBF4. This is called your fluoroboric acid. जब रिएक्शन करिवो एडी BF4 जाके N2 पाखर लागिवो द प्रोडक्ट विच बी बेंजीन डायजेनियम फ्लोरोबोरेट N2 plus BF4 minus N2 plus BF4 minus. This is HCl reducer benzene diazonium फ्लोरोबोरेट ए कंपाउंड कहि परियो. दिस नेम ऑफ द कंपाउंड बेंजीन डायजेनियम BDC बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड जतले फ्लोरोबोरिक एसिड रिएक्शन करिवो द फर्स्ट बेंजीन डायजेनियम फ्लोरोबोरेट बारियो. नेक्स्ट व्हेन इट इज ऑन हीटिंग द प्रोडक्ट विल बी फ्लोरोबेंजीन. तो ताकू हिट कला पर फ्लोरोबेंजीन नेक्स्ट पर बारियो. तो बेंजीन ऊपर फ्लोरीन रहि जो बाकी बाई प्रोडक्ट की पळेओ कोन नाइट्रोजन N2 plus BF3 N2 plus BF3 फ्लोरोबेंजीन विल प्रिपेयर. फ्लोरोबेंजीन विल बी प्रिपेयर. कहीटा कि ना कौन कह क्लियर. नेक्स्ट विल दिस रिएक्शन कॉल्ड योर बाल्ज-साइमन रिएक्शन. दिस रिएक्शन गोटे नेम अच्छे पिला माने नेमिंग रिएक्शन पचारे बाल्ज-साइमन रिएक्शन. बाल्ज-साइमन रिएक्शन. So preparation of a fluorobenzene from BDC
प्रिपेरेसन ऑफ फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बीडीसी बीडीसी रु फ्लोरोबेंजीन तैयारी करिया कौन कहते बाल्ज साइमन रिएक्शन सो एमती भी क्वेश्चन आसपे प्रिपेरेसन ऑफ फ्लोरीन कंपाउंड बा फ्लोरोबेंजीन इज डिफिकल्ट फ्रॉम बेंजीन डायरेक्टली क्लियर सो व्हाट इज द अल्टरनेट रूट हाउ टू सिंथेसाइज फ्लोरोबेंजीन दिस इज द रूट सो बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड फ्लोरोबेंजीन डायरेक्ट तैयारी करिया हम पे डिफिकल्ट होबो फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव ग्लास मेटेरियल रिएक्शन कर अटैक कर सो बीडीसी रु फ्लोरोबेरिक एसिड पकेला पर डायरेक्ट तैयारी हो पारियो दिस मेथड इज कॉल्ड बाल्ज साइमन रिएक्शन नाउ आइडोबेंजीन यू नो हाउ कैन यू प्रिपेयर आइडोबेंजीन फ्रॉम बीडीसी नेक्स्ट आंसर लेट्स सी गोटे गोटे आंसर कर गोटे हाउ कैन यू प्रिपेयर आइडोबेंजीन फ्रॉम बीडीसी सो योर बीडीसी बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड दिस इज ऑप्शन 4 नंबर आंसर बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड when heated with the potassium iodide Ki react with the potassium iodide Ki reagent so the product will be iodobenzene plus nitrogen will be available plus your KCl clear so benzene diazenyl chloride jitale potassium iodide pakai the iodobenzene will form okay now next answer this is your iodobenzene synthesis how chlorobenzene react with the chlorine FeCl3 next question how chlorobenzene reacts with the chlorine in FeCl3 chlorobenzene what happen when chlorobenzene reacts with the chlorine in presence of FeCl3 FeCl3 is a Lewis acid which acid Lewis acid in presence of Lewis acid this is chlorination if chlorine is reacting chlorination so all aromatic compounds shows electrophilic substitution reaction already I told जितक सब aromatic compound एटा सब chlorination गोटे electrophilic substitution reaction तो इथरे कोन chlorine ता you know chlorine halogen are orthopara or meta dieting group orthopara dieting group all are chlorine halogens chlorine bromine iodine these are orthopara dieting group so chlorine jatole incoming chlorine acid depend upon the already jo group ta so this is orthopara dieting group so the product will be like this a mixture of ortho dichlorobenzene and para dichlorobenzene will form either chlorine acid ortho jagar lagibo nole para position attach hobo clear already the mechanism mu kahi deichi so chlorination of benzene chlorine जाकि लागि पारि ओडी कोडी ortho position लागि पारि न para position लागि हो so the two product will form this is ortho dichlorobenzene or this is called your para dichlorobenzene ए दीटा प्रोडक्ट पिला माने बाहर परियो ortho dichlorobenzene और para dichlorobenzene so when chlorobenzene reacts with the chlorine chlorobenzene reacts with the chlorine in presence of FeCl the product will ortho and para dichlorobenzene will form clear next reaction how chlorobenzene react with the sodium aqueous solution of sodium hydroxide and hydrochloric acid clear this is a completely nucleophilic substitution reaction of a aryl halide which is difficult to show but on heating it will show next question option number B option 2 को जाउची so what the question how chlorobenzene reacts with the sodium hydroxide aqueous solution of a sodium hydroxide this reaction occurring in between that is a high temperature 300 atm pressure and 623 Kelvin temperature okay and acidic medium H plus so the reaction will first product sodium phenoxide ONA this is ONA part first like chlorine bahariba ONA and minus HCl hydrogen and chlorine hydrochloric acid this is sodium phenoxide first bahariba this is called your sodium phenoxide again ta sahito jodi hydrochloric acid mu add korchi H plus jagi lagibo this is your phenol part will form okay minus NaCl plus NaCl so this is phenol will prepare what will prepare so chlorobenzene react with the aqueous solution of sodium hydroxide dissolved in hydrochloric acid to form phenol this reaction name is a Dowd process which process
Dawes process. This reaction has a name, is called your Dawes process. Which process? Dawes process. Next, how chlorobenzene react with the CH3COCl in AlCl3? This is your Friedel-Crafts acylation reaction. Acid halide CH3COCl is called your RCOCl. See the methyl chloride, acetyl chloride by ethanol chloride. Acetyl chloride. Okay, this is reaction is already noted. This is called a Friedel-Crafts acylation reaction. Which reaction? Friedel-Crafts acylation reaction. Friedel-Crafts acylation reaction. Friedel-Crafts acylation. This reaction called which reaction? So what is the product will form? Similarly, when chlorobenzene react with the acetyl chloride, the option is question is given. The write the reaction is the important question. Exam re asida hochi pila mane. Chlorobenzene react with the CH3COCl acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. So COCH3 part jibo. Eta positive part ta eti asibo kono ortho kima para. The answer will be a mixture of orthochloroacetophenone or parachloroacetophenone. COCH3, and this is your para position is the major position. Para, the answer will be parachloroacetophenone. This product is called parachloroacetophenone, and this is orthochloroacetophenone. पिला माने बुझी पाले यही आंसर आसियो. सो दी एसिटिल क्लोराइड फ्रीडेल-क्राफ्ट acylation नोट को देखि परियो जानि परियो RCOCl फ्रीडेल-क्राफ्ट acylation R बदल CH3 पकाई छी एसिटिल क्लोराइड. This is the long question number 4. Now we'll see the long question number 5. So hi students, today we will discuss one of the important concept of your haloalkane and haloarenes chapter. It's one of the important topic, that is your nucleophilic substitution reaction. Already in 11th standard I told you about the types of organic reaction, in which one reaction is substitution reaction. Under that different type of substitution already we discussed. That is your nucleophilic substitution, electrophilic substitution and free radical substitution. But in 12th standard of your chapter haloalkane and haloarenes, it is another section we will discuss briefly with its mechanism. That is SN reaction, nucleophilic substitution reaction. So today topic is your nucleophilic substitution reaction. जार शॉर्टकट रे में लिखुचे SN, SN reaction. So what do you mean by SN reaction? Nucleophilic substitution reaction. In alkyl halide chapter already we will discussing alkyl halide. The general formula for alkyl halide is RX. Basically all alkyl halides show easily the nucleophilic substitution reactions. All alkyl halides show easily the nucleophilic substitution reaction. So what do you mean by nucleophilic substitution reaction? In alkyl halide RX, this is the general formula for alkyl halide. When it reacts with a nucleophile is negative or positive charge. Already I discussed. Your nucleophile is a negative charge species. Yes, very good. Nucleophile means a nucleus loving species. जो न्यूक्लियस को प्यार करता है, न्यूक्लियस एटम के अंदर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, उसको प्यार करता है कौन, नेगेटिव चार्ज. तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली नेगेटिव चार्ज स्पेसिस और हाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लाइक योर वाटर, ammonia, like these molecules have also more electron or lone pair electron available. So basically nucleophile indicating negative charge. So when alkyl halide react with a nucleophile, the product is your RNu plus X. So nucleophile product is formed.
So this is the attacking reagent. So जो reaction में attacking reagent रहिला न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नाम कहूचे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. जो रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट रहा इलेक्ट्रोफाइल दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑलरेडी जहाँ कि आम डिस्कसन करछे आमर प्रीवियस मेकानिज्म क्लास रे जोटा हम पकड़े जीओसी पढ़े जीओसी सब जिन डिस्कसन है जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी वो डिस्कस है. तो आज टॉपिक हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाट हैपनिंग in generally a nucleophile is substituted in the place of halogen and the halogen is eliminated. Simple, halogen is eliminated. So let's one example with briefly discuss, but it details हमें देखिबा with its mechanism. The types of nucleophilic substitution reaction, types of SN reaction. Your nucleophilic substitution reactions are two types. There are two types. How many types? Two types. Number one is your SN1. Number two is your SN2. What do you mean by SN1 and SN2? Your SN1 is a unimolecular nucleophilic substitution reaction. Unimolecular nucleophilic substitution reaction. Whereas SN2 stands for your bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bimolecular nucleophilic substitution reaction. Clear? So dear students, today we will discuss about SN1 and SN2. Our today's topic is your nucleophilic substitution reaction and its types. We will discuss the mechanisms of a SN reaction. So dear students, now we will proceed to details of this reaction. SN1 and SN2. SN1 unimolecular nucleophilic substitution reaction, or you can say nucleophilic substitution reaction unimolecular, and SN2 is bimolecular. First we will discuss SN1. हम SN1 के बारे में कुछ पहले बात करेंगे. SN1 clear. First this type SN1 it is shows this type it is shown by your tertiary alkyl halide. Which alkyl halide shows this reaction? Which alkyl halide shows this reaction? So we know alkyl halides are three types: primary, secondary, tertiary alkyl. Basically SN1 reaction देखा पे favor किए करियो tertiary alkyl halide. It is shown by tertiary alkyl halide. Clear? You know the formula for tertiary alkyl halide. Your tertiary alkyl halide RCX. This is your tertiary alkyl halide. So SN1 reaction basically tertiary alkyl halide favor करियो. काहेंगे देखेबा हम जानिया आगु को. Number 2 point. SN1 विषय आउ कौन जानी परियो? Hello. It occurs. This reaction occurs. It occurs in two steps. A reaction dita step रहा. This reaction occurs in two steps. Hello. This is very important point. Note it. SN1 reaction occurs in two steps. How many steps? So your step 1. Let's see step 1. So our aim is alkyl halide react with the nucleophile. Clear? Our aim is alkyl halide react with a nucleophile. Our aim is alkyl halide की nucleophile में reaction करिवा. Alkyl halide की nucleophile reaction करिवा. But SN1 is basically prefer for tertiary alkyl halide. So let's see in this step 1 it is this reaction proceed through two steps. SN1 reaction that dita step रहो. So step 1 होची कोनो ना breakage or breaking or cleavage जा लिखि परियो cleavage of carbon halogen bond of tertiary alkyl halide. So tertiary alkyl halide रे प्रथमे carbon halogen bond ता break होबो step 1 रे. So your tertiary alkyl halide RCX. This is your tertiary alkyl halide. Clear? Hello. This is your tertiary alkyl halide. First step रे कोन होबो ना carbon halogen bond ता break होबो. कार्बन हालोजन बॉन्ड ब्रेक हम जदि कार्बन हालोजन बॉन्ड भीतर ब्रेक हम आम ऑलरेडी पढ़े 11th स्टैंडर्ड पीरियडिक टेबल कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 बेसिकल हालोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हालोजन इज ग्रेटर देन कार्बन सो जो बॉन्ड क्लेवेज हम इट इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज व्हिच बॉन्ड क्लेवेज अलग अलग आटम अच्छी सो इट विल क्रिएट आयंस सो व्हाट हैपेंस नाउ आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड द प्रोडक्ट विल CR plus and X minus. So carbon ऊपर positive charge create होची. But my dear students, this is carbon ऊपर positive charge है carbocation. What is?
So first in this step, the bonding of carbon and halogen, the breakage of carbon and halogen create your carbocation, create your or carbonium ion. But the shape and structure of a carbocation is a trigonal planar. This is triangular. We will write him like this: R R R C plus. Clear? Similar? No problem. So first step रे carbon halogen bond टा break होची. Carbon to halogen बाहर की पड़ेला पर carbon पर को charge हबो? Positive charge. Halogen negative. काहे की? Halogen is more electronegative than carbon. Step 1, carbocation. The reaction intermediate is carbocation. Carbocation. Or we can say carbonium ion. बुझियो पिला माने? You know, in carbocation case, tertiary carbocation is more stable than secondary than primary. जदि तमे चाहिए मोर GOC वीडियो देखि परियो. GOC वीडियो रे सब लिखा है. So carbocation, carbon ऊपर positive charge created. This is tertiary carbocation is formed. Carbocation. This is the reaction intermediate. It is the reaction intermediate. So in SN1 reaction, which is reaction intermediate? Carbocation. Step 1, step 2. Step 2 रे कहबो ना bond breaking है nucleophile will attack. Nucleophile negative charge. Nucleophile will attack. Nucleophile कोटी अटैक करिवो ना रिएक्शन इंटरमीडिएट को कोटी अटैक करिवो. Nucleophile will attack to reaction intermediate. So reaction intermediate रे nucleophile now attack करियो. Step 2. Now let's see the step 2. So here tertiary carbocation R C R. Your tertiary carbocation, is it visible? RRC, positive charge. Now the nucleophile negative charge particularly will attack. The nucleophile will attack. So what happening when it will attack? Let's see. There are two possibility of attack. There are two possibility of attack of nucleophile. Either nucleophile will attack into carbocation in the front direction. Otherwise nucleophile attack to the carbocation in the backward direction. Either attack करि परियो front direction नचते कोटे attack करि परियो backward direction रे. Clear? जदि front रे attack करते तो one product आसिबार chance अछि, back रे मध्य another product will form. In front direction the product will be, there are two possibilities of values. Nucleophile will attack in the front direction, the product will like this C R R N U, front direction. Clear? And backside is the product is your backside attack. This is Nu C R R R. Clear? There are two possibilities of product. Either nucleophile will attack in the front direction or nucleophile attack in the backward direction. Clear? So there are two possible product. One is a retention. Retention means no change. Jemiti front the retention. Another is inversion. The two product is formed. Possibility of a two product form. Possibility of a two product form. Note it, very important point. So what happening here? The reaction will occurring in two steps. SN1 occurring in two steps, and it has been observed that this is your slow step. Practically it is of the first step is your slow step. The breaking up of carbon halogen is a slow step, and slow step is your RDS, rate of determining step. RDS, slow step is your rate determining step. Slow step is the rate determining step. तमें slow step रू सब rate of determining करियो. Clear? And here the product is for the front direction and backward direction. Simple पिला माने प्रथम step रो जति tertiary carbocation देखिबा CH3 example ला बटिके clear देबे. First is the product. So the mixture of a retention and inversion product. The mixture of two product पाइला. Mixture of front direction attack कले कोन retention माने halogen जो जगह थिला से जगह जाके nucleophile लागि गला. बुझि परछ तो दीटा प्रोडक्ट बाहर परछि. आउ थरे क्लाइट देखे दोछि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन हमें कहिछे. इट इज ट्रायगोनांगुलर शेप RRRC पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव चार्ज. एक सो न्यूक्लियोफाइल आसी अटैक करिवो. काहा को अटैक करिवो? सेकंड स्टेप रे कार्बोकैटायन को. काहा को अटैक करिवो? तो कार्बोकैटायन को आसले फ्रंट रू अटैक करि पार चांस अछि, बैक रे भी अटैक करि परियो. जदि फ्रंट रू अटैक कला प्रोडक्ट आसीबो रे तमरी CRRRNU. फ्रंट रू अटैक कल माने रिटेंशन कहती. रिटेंशन माने किछि परिवर्तन हम जेमि थिला एठी हालोजन बाहरला एठी न्यूक्लियोफाइल लागिला. सिंपल हालोजन जो जगह रे लागिला बाहर थिला न्यूक्लियोफाइल से जगह रे लागी गला. सो द प्रोडक्ट इज योर रिटेंशन. द प्रोडक्ट इज योर रिटेंशन. जदि बैक साइड रो पिला माने अटैक करिवो न्यूक्लियोफाइल टा जागी तो प्रोडक्ट बैक साइड न्यूक्लियोफाइल बैक साइड लागिला इन्वर्सन. द प्रोडक्ट इज योर इन्वर्सन प्रोडक्ट. सो द मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्सन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर. व्हाट इज very important?
the product, the mixture of you can write, so the mixture of a retention and inversion is called your racemic mixture. It's called a racemic mixture. A racemic mixture product. So in SN1 the product is always a racemic mixture. In SN1 the product is always which product? A racemic mixture. Racemic mixture. Clear? Clear? SN1 mechanism. Now just see, this is the step number 1, breaking of a carbon halogen bond to form carbocation. This is step number 2, attack of a nucleophile. Simple, it is in the front direction and backward direction. Repeat kar deji tole dekha jayeni bole, you can write here easily. So in the SN1 reaction, the product is always what? The product is always racemic mixture. Note it. In SN1, the product is always what? A racemic mixture. Clear? A racemic mixture. Note it. So SN1 reaction occur in how many step? First step, the breaking of a carbon halogen bond to form carbocation. Second step, attack of a nucleophile in the front direction and backward direction to give 2 possible products, retention and inversion. Clear? In front direction it is retention, in back direction it is. So the mixture of the product is your racemic mixture. Which product? So in the SN1, which is the reaction intermediate, student? Carbocation. Now the second step is a slow step. This is the second step, slow step, and first step is second step is your fast step, and this is another step is a slow step. Always the rate of reaction determined from which step? Slow step. So your now step 1 is your slow step, R X. Okay, तो हो गया आपका C R plus X minus. This is very slow step. In this step, the rate of a determining step, RDS, rate of a determining step. Now we will tell why it is SN1 and how. How it is SN1. So because the rate of reaction can be measured from the slow step always. Rate of reaction can be measured from the slow step. So the first step is the slow step. So rate R is equal to K. Rate of reaction will depend upon the only alkyl halide R111CX. So rate of reaction only depend upon alkyl halide, tertiary alkyl halide. So one reactant species upon depend korche. So it is unimolecular. It is clear. Why it is unimolecular? Do you understand clearly? So SN1 reaction जेतबेले दुईटी स्टेप रहउचे. फर्स्ट स्टेप ता प्रैक्टिकल बेसिस से देखाउचे स्लो स्टेप. फर्स्ट स्टेप जदि जीवा देखिया, फर्स्ट स्टेप रो रिएक्टेंट स्पेसीज केवल जणे अछि के टर्शियरी अल्किल हैलाइड. रिएक्शन स्पीड ता केवल डिपेंड करचे टर्शियरी अल्किल हैलाइड ऊपर. न्यूक्लियोफाइल रे इधर किछि आवश्यक नै. न्यूक्लियोफाइल किछि इफेक्ट नै. SN1 रे न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अफेक्ट. कारण फर्स्ट स्टेप रो हम रेट ता डिटरमाइन करचे. सेकंड स्टेप रे न्यूक्लियोफाइल आंसर अटैक करी प्रोडक्ट बाहरछि. Clear? Is there any doubt? Then next point, SN1 reaction. So this is SN1. SN1 reaction, the order of a reaction of alkyl halide. SN1, which alkyl halide? So SN1 better tertiary alkyl halide. Then your secondary alkyl halide. Then your. So this is the order of a reactivity of towards SN. SN1 reaction, order of a reactivity. So tertiary alkyl halide shows SN1 reaction faster. Then secondary, then primary alkyl halide. Suppose गोटे क्वेश्चन देछि पिला माने no primary alkyl, tertiary is better product. Most carbocation, stable carbocation is formed tertiary. Let's see, गोटे क्वेश्चन देछि. This is the question. Out of these 3 alkyl halide, this is option A, option B, option C. तीनोटी अल्किल हैलाइड व्हिच विल शोज बेटर टू SN1. SN1 किए भलो देखबो. SN1 इज शोन बाय टर्शियरी अल्किल हैलाइड बेटर. एमानक भितर टर्शियरी अल्किल हैलाइड कोटा? टर्शियरी कार्बन हैलाइड. दिस इज योर टर्शियरी कार्बन C. सो दिस कार्बन इज टर्शियरी कार्बन. ए टर्शियरी कार्बन को हालोजन लागि छि. दैट मीन्स दिस अल्किल हैलाइड शो SN1 फास्टर. सो द आंसर इज C फास्ट देखबो. तापर कोटा आसीओ सेकेंडरी. एडा सेकेंडरी कार्बन. सो दिस इज देन A, देन इज टू बी B. So this is the right answer. बुझी पारछो पिला माने. तो SN1 रिएक्शन किए एई भाले क्वेश्चन मध्ये आसी पारे परीक्षा रे.
क्लियर सो आउ गोटे क्वेश्चन देछि सपोज इन SN1 reaction if the concentration of the alkyl halide increases 2 times and the nucleophile concentration increases 2 times what is the rate of reaction affected rate of reaction suppose the concentration of a nucleophile suppose the question is concentration of a nucleophile increases 2 times in a SN1 reaction what is the rate affected 2 times 4 times 8 times no change not affected no change why because in SN1 nucleophile does not depend it is first step rate ta determine kara hochi pila mane suppose gote reaction dechi alkyl halide suppose the question is your alkyl halide or nucleophile if the concentration of alkyl halide increases alkyl halide concentration no change nucleophile concentration increases 2 times what is the rate of reaction affected in SN1 SN1 कहाँ पर डिपेंड करियो SN1 only depend upon alkyl halide कहाँ पर डिपेंड करियो your tertiary alkyl halide not to be nucleophile does not depend clear so nucleophile जते चेंज कले भी किछि फरक पड़िबोनी clear no change so this is SN1 now SN2 finally SN2 this is all about SN1 now SN2 just see SN2 your SN2 is your bimolecular nucleophilic substitution reaction bimolecular nucleophilic substitution reaction bimolecular nucleophilic substitution reaction bimolecular nucleophilic substitution reaction clear ता विषय लिखा SN2 first shown by SN primary alkyl halide which alkyl halide this is shown by basically primary alkyl halide SN2 shown by which hello primary alkyl halide shown kariba SN2 easily it occurs in a single step it occurs in a single step it a single step gote step rahi jo clear in this reaction what happening dekho alkyl halide when react with the nucleophile let's see SN2 रे कोबळे भाबरे रिएक्शन दाबा SN2 रे nucleophile आसीबो the nucleophile is always attack in the backward direction which direction SN2 रे nucleophile सबले पछपट अटैक करियो कोबट अटैक करियो in SN2 nucleophile is always attack to backward जण पचार सारे फ्रंट रो अटैक कले कोन होइजो की एडी किछ होबनी nucleophile दा नेगेटिव चार्ज हालोजन दा भी नेगेटिव चार्ज so negative charge take more repulsion reaction करिया बदल repulsion create हो so nucleophile will attack in the backward direction faster so nucleophile आसियो backward direction attack करियो काकू alkyl halide x try to leave करियो clear so nucleophile attack to the alkyl halide in the backward direction एपड attack करछि so this will start to leaving group so this is the reaction intermediate reaction 5 member transition state then कौन हो ना halogen टा लीव हे जो nucleophile this is the product nucleophile and product and plus x बाहर की पळेबो x minus बुझियला so this is the leaving group SN2 generally shown by primary alkyl halide this reaction occur in a single step in this step what happening suppose this is your alkyl halide primary alkyl halide this is your nucleophile negative charge so nucleophile एटी कौन हम बैक साइड रू सब अटैक करिवो को साइड रू अटैक करियो बैक साइड रू अटैक कले कौन हम nucleophile जाके अटैक करिवो आर सहित एटी एक्स्ट्रा लिविंग ग्रुप छाड़ी देउथिवो सो दिस इज मजिस्टेट ट्रांजिशन स्टेट तापर जतले nucleophile गेट अटैच्ड हे जिवो nucleophile और प्रोडक्ट आर लागि होला आ एक्स्ट्रा बाहर की पळेला बुझिला तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज हियर इन्वर्सन प्रोडक्ट सब कोन आसीबो so in SN2 the product is very important point in SN2 the product is always inversion in SN2 the product is always inversion in SN2 the product is always inversion clear suppose gote question dei SN2 acha in SN2 let's see in SN2 gote example daba SN2 ro
Suppose this is a primary methyl bromide CH3Br. Clear? Methyl bromide. When react with the nucleophile, suppose KOH, potassium hydroxide, aqueous KOH. Clear? Huh? This is primary alkyl halide. Reaction karibo. How the reaction is occurring? Let's see. K plus OH minus K plus. So the attacking reagent here is OH minus hydroxy ion. It is nucleophile. It is nucleophile ke? It is nucleophile ke? So OH minus attack karibo always in backward direction. Let's see what happening. See H get attached to OH attach ho jaise H Br. Clear? This is your leaving group. Clear? This is your bromine टा leave करियो छाड़िबो OH टा अटैक होची एटा मझी स्टेट टा एडी केतरा मेंबर कार्बन सहित लागलेनी केतरा 1 2 3 4 5 दिस इज 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट 5 मेंबर रिएक्शन इंटरमीडिएट रे कोन SN2 रे रिएक्शन इंटरमीडिएट के 5 मेंबर SN1 रे कार्बोकैटायन SN2 रे के 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट 5 मेंबर तापर कौन हम न्यूक्लियोफाइल बेटर इज द लिविंग ग्रुप फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन ब्रोमीन ग्रुपटा सहज जो छाड़ी पड़ेब ताल प्रोडक्ट आसो कौन OH लगला द प्रोडक्ट इज इनवर्सन प्रोडक्ट दिस इज CH3OH प्लस ब्रोमीन बाहर की पड़ेला क्लियर सो ये जो SN2 होची देखा जाए दिस इज द फास्ट स्टेप इज योर स्लो स्टेप प्रथम जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे प्रैक्टिकल एटा होची स्लो स्टेप एटा को स्टेप स्लो स्टेप सो रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप कोड एटा फास्ट हो सेकंड स्टेप रे स्टेप फास्ट हो सेकंड पॉइंट रे प्रथम जो न्यूक्लियोफाइल गेट अटैक हम बैक साइड रे से स्लो स्लो होची प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कराई क्लियर सो रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप को स्टेपटा स्लो स्टेप को स्टेपटा स्लो स्टेप एटा होची स्लो स्टेप तो स्लो स्टेप को चलो प्रथम स्टेप रे तो स्लो स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली की रहले रेट ऑफ रिएक्शन का पर डिपेंड करछि अल्किल हैलाइड आउ का पर डिपेंड करछि न्यूक्लियोफाइल दि जन पर डिपेंड करछि ना तो rate of reaction here depend upon alkyl halide and nucleophile. In SN2 rate of reaction depend upon alkyl halide and so how many molecules are there? So it is bimolecular. So it is clear. So 1 plus 1 2 second order kinetics or it is bimolecular. It is बुझियला तो कहीं bimolecular हैला हाँ SN2 is bimolecular. SN2 is why? Because the rate of reaction depend upon both alkyl halide and nucleophile. ये जब मैं अल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन चेंज कर देबी न्यूक्लियोफाइल भी कंसंट्रेशन चेंज करी रेट अकॉर्डिंग टू दिजन जगह चेंज करी काढ़िया पड़ो क्लियर जब अल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन मु 2 टाइम्स बढ़ाई देली न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाई देली तो रेट ऑफ रिएक्शन ने 4 टाइम्स हो बुझियो तो सो हियर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन बोथ अल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल सो डियर स्टूडेंट्स इन SN1 the product is your always a racemic mixture. In SN2 the product is always inversion. Very important point. Inversion SN2 inversion SN1 racemic mixture SN1 racemic mixture SN2 inversion SN2 the product is always inversion. Remember it. Clear? Which alkyl halide shows SN2 better? Which alkyl halide shows SN2 better? SN2 को alkyl halide देखो primary alkyl halide primary alkyl halide clear so the order of SN1 or sorry the order of SN2 का order कौन सी हो ना tertiary alkyl halide ना primary alkyl halide is better then 2 degree वाला secondary alkyl then 3 degree वाला this is the order of SN2 note it very important point now the question for SN1 and SN2 this is iodine this is your iodine which of the following A B C which of the following shows SN1 faster SN2 faster SN2 के better देखेबो for SN2 the answer is C will be better primary this is primary this is your A this is your B clear so SN2 पे primary alkyl halide first show करो then secondary then tertiary clear so this is your SN1 and SN2 doubt and I will let clear now simple thing SN1 shown by tertiary alkyl halide SN2 primary SN2 the product is both direction that is a retention and inversion mixture called a racemic mixture clear and SN2 the product is always inversion SN1 occurs in 2 steps SN2 occurs in single step in SN1 the first step the carbon halogen bond will break to form carbocation intermediate
Second step, the nucleophile attack in the carbocation in both forward direction and backward direction. In SN2, the nucleophile attack in the backward direction, the product is always inversion. Clear? Another point, what is the role of protic and aprotic solvent? I will explain. In SN1, what is the role of solvent? Solvent is here. Solvent की जरूरत भी होता है to weak the bond break करने पे. So alkyl halide in SN1, you will take the solvent here, protic solvent and SN2 aprotic solvent. Your protic solvent, polar protic solvent, and here polar aprotic solvent. Polar aprotic solvent. एटा mechanism रे दरकार. Why the polar protic solvent is required? Aprotic solvent we will discuss in next class. Clear? So this is all about, you will write after this one SN1 and SN2. The role of polar protic solvent is here, polar aprotic solvent is here, whose work is to weaken the bond of carbon and halogen. Carbon halogen bond टा weak करने पे solvent रो भी आवश्यक हो. जो न्यूक्लियोफाइल अटैक बाहर हो ताको ग्रुप करने पे अटैक करियो तापर डिस्कशन करिया नेक्स्ट क्लास.